Hello friends, today we are going to discuss of the sum number 4, page number 143, जास्मिन लिमिटेड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एग्जांपल है। तो वो डिस्कशन करेंगे। टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन 40 लाख रुपीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। तो जो भी असेट्स है वो आपको डबल करनी है। The goodwill of the company is to be valued at double the average super profit। जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उससे आपको मल्टीपल बाय 2 करना है तो आपको गुडविल मिल जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ द कंपनी वाज रुपीज 12 लाख, 12 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 year profit is given। Expected rate of return in the company's line of business, it means expected rate of return is given 10%। For the last 3 years, company has transferred 25% of the profit and earned every year to its general reserve account and distributing the balance amount to shareholder as a dividend। From the above information, find out the intrinsic value, average yield value and fair value of the shares of the company। तो आपको शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसमें क्या आपको फाइंड आउट करना है? तो फर्स्ट में आपको गुडविल फाइंड आउट करना है, उसके बाद शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल फाइंड आउट करना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज 5 लाख, बट एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज अ डबल। तो आप मल्टीपल बाय 2 करना है। तो 5 लाख मल्टीपल बाय 2, आंसर इज 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट ऑफ 20 लाख मल्टीपल बाय 2, आंसर विल बी 40 लाख रुपीज। फर्नीचर टोटल वैल्यू इज 2 लाख मल्टीपल बाय 2, आंसर विल बी 4 lakh rupees। Now stock 8 lakh multiplied by 2, answer will be 60 lakh rupees। Debtors and bank balance never to be increased, right? तो आपको बुक वैल्यू कंसीडर करनी है। तो 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज, टोटल आपका असेट्स का टोटल आएगा 75 लाख रुपीज। और लायबिलिटी 12% डिबेंचर 5 लाख रुपीज और क्रेडिटर्स 5 लाख रुपीज, टोटल आएगा लायबिलिटी का वो 10 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 75 लाख माइनस 10 लाख, आंसर विल बी 65 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन आपके पास नहीं है तो वो आपको डैश लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स इज इक्वल टू 65 लाख रुपीज। नाउ स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपके पास 3 साल का प्रॉफिट है 12 लाख, 12 लाख और 12 लाख डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट 36 लाख डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल बी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 लाख रुपीज। नाउ स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय स्टेप नंबर 1 मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। 65 lakh multiplied by 10, answer is 6,50,000 expected profit। Now step number 4, super profit is equal to average profit minus expected profit। Average profit answer is 12 lakh rupees minus expected profit 6,50,000। Super profit is equal to 5,50,000। Now step number 5, goodwill is equal to super profit multiplied by number of year, it means year of purchase is given in the example। What is value at a double multiple by 2 करना है। तो goodwill is equal to 5,50,000 multiplied by 2, answer will be goodwill is equal to 11 lakh rupees। Answer of the goodwill is equal to 11 lakh rupees। This is a calculation of the goodwill। Now calculation of the shares, step number 6, net assets with goodwill। Net assets is equal to 65 lakh rupees plus goodwill is equal to 11 lakh rupees। Net assets with goodwill is equal to 76 lakh rupees। Now step number 7, intrinsic value is equal to net asset divided by number of equity shares। Net assets is equal to 76 lakh divided by number of equity shares is equal to 20 lakh divided by 10, answer will be 2 lakh। It means intrinsic value is equal to 38 rupees। Now calculation of the rate of dividend is equal to net profit divided by equity share capital multiplied by 100। net profit is equal to, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया 12 लाख रुपीज माइनस एडजस्टमेंट नंबर 5, कंपनी हैज बीन ट्रांसफर 25% ऑफ द प्रॉफिट ऑन एवरी ईयर टू बी जनरल रिजर्व अकाउंटिंग। तो उसमें से 25% आपको लेस करना, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 12 lakh minus 25% is equal to 9 lakh rupees। net profit divided by equity share capital is equal to 20 lakh multiplied by 100, answer of the rate of dividend is 45%। Now step number 9, market value is equal to rate of dividend multiplied by paid up value per share divided by expected rate of return। Rate of dividend is 45 multiplied by paid up value is equal to 10 rupees divided by expected rate of return is equal to 10%। तो market value of the equity share is equal to 45 rupees। Now last number step, fair value is equal to intrinsic value plus market value divided by 2, 38 rupees plus 45 rupees divided by 2, answer of the fair value is equal to 41.5 rupees। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ जास्मिन लिमिटेड गुजरात यूनिवर्सिटी TY BCom में अप्रैल 1993 का एग्जाम्पल है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंट का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू।